Hello, bonjour, namaskar, and salam. Welcome to my talk on Esperanto. ये मेरा एस्पेरांटो के बारे में टॉक है। ये टॉक होने वाला है हिंदी लैंग्वेज में, लेकिन मैं अंग्रेजी का भी काफ़ी उपयोग करने वाला हूँ। इनफैक्ट ये टॉक जो है ये उन लोगों के लिए है जो हिंदी भी जानते हैं और अंग्रेजी भी। तो एस्पेरांटो क्या है? एस्पेरांटो एक लैंग्वेज है, जैसे फ्रेंच, जर्मन, इटालियन उस टाइप का एक लैंग्वेज है। लेकिन इसमें ये खास बात है कि ये लैंग्वेज एक एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। और ये लैंग्वेज को इंटरनेशिया लिंगुओ भी कहते हैं। इंटरनेशिया लिंगुओ यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज और एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इन एस्पेरांटो। ये एक कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये नेचुरली डेवलप नहीं हुआ, बल्कि किसी व्यक्ति ने डेवलप किया। और एस्पेरांटो के बारे में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। और उस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म हम लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं एंड होपफुली इवन लिटरेसी का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और इस लैंग्वेज में ये खास बात है कि ये काफ़ी इजी है लर्न करने के लिए। ये एस्पेरांटो का एक बेसिक ओवरव्यू है। अब हम देखते हैं कि एस्पेरांटो क्या है मोर डिटेल में, क्यों ये फैसिनेटिंग है, और लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एस्पेरांटो में एस्पेरांटो की क्या बातें इंटरेस्टिंग है। सो ये है मेरा पहला स्लाइड डेक में। सो हम भाषाओं के डायरेक्शन में थोड़ा देखते हैं। Let us look at the world of direct languages. So I did some research, and this is also confirmed based on what ChatGPT says. So in fact, this talk is based on a talk by an individual on the YouTube channel called Innovative Program. और वो ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति हैं, और उनका नाम नीचे लिखा नहीं था, सो आई एम नॉट एबल टू एक्नॉलेज हिम, बट आई वांट टू क्रेडिट द यूट्यूब चैनल इनोवेटिव प्रोग्राम। ठीक है। तो उन्होंने भी ये रिसर्च में ये फाइंड किया कि दुनिया में मोर देन 7,000 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है दे स्पीक ओनली 23 लैंग्वेजेस। आउट ऑफ 7,000 ओनली 23। और कई सारे जो लैंग्वेजेस हैं जो बहुत ही कम लोग बोलते हैं, और there are a few languages that are spoken by many. So many people speak a few languages, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मैंडरिन etc. हिंदी भी। But many languages are spoken by just a few people. So ऐसा देखा जाए तो what are the top languages by speakers? सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले लैंग्वेजेस कौन है? इंग्लिश, मैंडरिन, स्पेनिश। Or in terms of top languages by native speakers, Mandarin, then Spanish, then English. So the main takeaway ये है कि there are many languages in the world, right? So ये एक पिक्चर है ज़ामेनहॉफ का, और इन्होंने एस्पेरांटो का इन्वेंशन किया। सो एस्पेरांटो इज अ कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज, यानी कि ये कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है। सो ज़ामेनहॉफ के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ मैं अभी। एल ज़ामेनहॉफ बियालिस्टोक करके एक जगह में he invented Esperanto in Bialystok, which is a town in Poland in 1887. उस टाउन में उन्होंने देखा कि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। कुछ लोग पोलिश बैकग्राउंड के थे, कुछ लोग ज्यूज थे, कुछ लोग जर्मन थे वगैरह। और उनको एहसास हुआ कि ये जो कम्युनिटीज हैं वो ज़्यादा मिक्स नहीं होते हैं, काफ़ी आइसोलेटेड रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि the reason why they are isolated and why the reason they don't mix is because
they all speak different languages और different languages का अपना अपना culture था, and they didn't want to mix with each other. So he thought, what if we had a single language? Okay, this is back in the 1880s, right? So he thought, why not have a single language that everybody would speak, and then we wouldn't have these types of differences, right? So आपने शायद ये देखा होगा कि मैं थोड़ा American accent में बोल रहा हूँ. So you could even think of American English as just different dialect of the original languages, which is English, right? लेकिन हमने ये भी देखा है कि अमेरिका और इंग्लैंड में इतना ज़्यादा फर्क भी है, राइट? सो बाय वे ऑफ इलस्ट्रेशन हम देख सकते हैं कि जब एक ही लैंग्वेज भी when it is like separated by an ocean, it starts developing differently, and you can see the differences in terms of culture between the Americans and the British. So उसी टाइप का कल्चरल डिफरेंस था. सो जैमेनॉफ ने सोचा कि एक लैंग्वेज हुआ तो देयर विल बी मोर यूनिटी, एंड सो एवरीबडी कुड स्पीक दिस लैंग्वेज. सो उन्होंने एक लैंग्वेज प्रिपेयर करना शुरू किया, डेवलप करना शुरू किया, एंड it has been the most successful constructed language. Esperanto is the most successful constructed language in the world. There are an estimated 2 million Esperanto speakers globally, right? Although the estimates vary. So estimates थोड़ा vary होता है, लेकिन there's an estimated 2 million Esperanto speakers. So the original goal Esperanto का क्या था? It was to be a universal auxiliary language. ये language सभी सीख सकते हैं, और it is supposed to be a language that belongs to no country, but at the same time ये language, it belongs to everyone. So everyone can learn it, and it is available also for everyone. So Esperanto, what does it sound like? Saluton. That's a word in Esperanto. It means hello, right? So just to summarize, it's a constructed language which is not tied to any country. The inventor of Esperanto was L.L. Zamenhof, Ludwig Zamenhof. ठीक है? The origins of Esperanto, Bialystok में उसका invention हुआ, and it is now in Poland. At that time, it was in Russia. So Zamenhof का क्या vision था? He observed, as I said, disharmony in his multi-ethnic town due to language barriers. So there were different languages which led to distrust and disunity. उसका solution था a common language for all, fostering global unity. Now इसमें ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने भी एक language invent किया है. It is based on Esperanto, and it is also to solve this problem of disunity within India and also other countries, because when the languages are different, that leads to distrust, it leads to conflict even. For instance, मैंने देखा है कि कर्नाटका और तमिलनाडु में काफ़ी language, because they speak different languages also, they identify as different people, and there is disunity. There are other advantages also with a constructed language like the one I have created. It is called Hesperanto. There is one called Hesperanto. There is another one called Kesperanto, and a third one called Tesperanto. So I have about 3 constructed languages, and that is not going to be the topic of this lecture, prelego, as we say in Esperanto. If I'm not mistaken, मेरा Esperanto काफ़ी low level पे. अभी तक मैं I don't know if I even crossed the basic level A1, so मेरा काफ़ी low level में है. So, but it is again like the goal with these languages is to foster national unity. Okay. So Esperanto का goal क्या था? To create a universal language that belongs to no country. And the idea was, it is again, to summarize, ये है एक unifying language for a more unified world. So let us look at why language learning is hard. Language learning difficult क्यों होता है? आपने कभी try किया होगा learning German या French, मुश्किल होता है. क्यों? Because like take German, there are die, der, das, just 3 words for just the word the, right? And in every context, you have to try and remember whether to use die, whether to use der, or whether to use das. Spanish and French also have gender nouns. In French, Spanish and French have gender nouns, and in French also you have this dirty das type of a thing with the word the. So in French you have la, le, and le. ऐसे कई languages में ऐसे होता है. So how do you know whether to use der, die, or das? You just have to know, right? You have to learn the language enough. It takes time. So this is what makes language learning. This is one of the things that makes language learning hard. It is that there are so many inconsistencies. Like for instance,
दिस इज वन ऑफ द, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक रीजन है जेंडर्ड नाउन्स, ठीक है। क्यों जेंडर्ड नाउन्स एक रीजन है? क्योंकि लाइक फ्रेंच में देखा जाए तो एवरी नाउन हैज अ जेंडर। सो मेस, द वर्ड मेसों मीन्स हाउस इन फ्रेंच, उसका एक जेंडर है। द वर्ड लीव्र, इट मीन्स बुक इन फ्रेंच, उसका एक जेंडर है। और ये वर्ड है avant-garde, that's actually not a noun, but you get the picture. You know, the, actually, I was going to go for garb, but anyway, so I should maybe, let me use a different example. Table, that means table, and that has a gender. So nouns have gender, and there are so many nouns that we use on a daily basis, and whenever we use that noun, we have to use the right gender. नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। सो ये इन ऑलमोस्ट ये लर्निंग कर्व का एक प्रॉब्लम है, राइट? ऑलमोस्ट नहीं, लर्निंग कर्व का ही प्रॉब्लम है। और इंग्लिश को देखा जाए, इट हैज स्ट्रेंज स्पेलिंग रूल्स। यू राइट समथिंग एज यू नो FOUGHT, that is fought. So OUGH is aw, but ROUGH is rough. So उसी का प्रोनाउंसिएशन हो गया ऑफ, राइट? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपने फेसबुक रील्स भी देखे होंगे। सो फॉट है, रफ है, सब में OUGH का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो इस रीजन के कारण भी इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है लर्न करने के लिए। ये है एक इसका स्पेलिंग भी कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं, इनकंसिस्टेंसी है। और फिर एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर इंस्टेंस एस ऐड करने से इंग्लिश प्लूरल बनाता है। सो फॉर इंस्टेंस रैट का होता है रैट्स प्लूरल, राइट? कैट का होता है प्लूरल कैट्स। सिमिलरली बैट का होता है बैट्स। लेकिन ऑक्स का इट इज नॉट ऑक्सिस, इट इज ऑक्सन। वो क्यों है? इनकंसिस्टेंसी हो गया, राइट? उसी टाइप के कई सारे कंसिस्टेंसीज हैं इंग्लिश में, इसलिए दैट इज अनदर रीजन व्हाई लर्निंग इंग्लिश कैन बी डिफिकल्ट। सो दिस इस टाइप की इनकंसिस्टेंसीज और एक्सेप्शंस कई लैंग्वेजेस में है। जर्मन में भी है, फ्रेंच में भी है, स्पेनिश में भी है, हिंदी में भी है, इवन संस्कृत में है। सो ये सभी लैंग्वेजेस में एक्सेप्शंस भी हैं, इनकंसिस्टेंस भी हैं, इसलिए लर्निंग इट इज हार्ड। लर्निंग इन लैंग्वेज को लर्न करना मुश्किल है, एंड लर्निंग अ लैंग्वेज इज हार्ड। और ये भी है होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, and then there is one problem. So like for instance, the word lie, it can mean two different things. Lie could mean lying down, or it could also mean speaking a falsehood. So इस टाइप के सेम वर्ड के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं। सेट के तो कई कई मीनिंग हैं। देन देखा जाए तो सो इस स्लाइड में थोड़ा गौर करें तो देखेंगे तो इसी देयर इज डर, डी और डास इन जर्मन, देयर इज एल, ला, लॉस एंड लास इन स्पेनिश, देन देयर इज ला, ल एंड ले इन फ्रेंच, जैसे मैं बोल रहा था, राइट? और इंग्लिश में देयर इज रूल आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, यानी कि एक्सेप्शन है। सो अगर सी आया तो यू हैव टू हैव ई बिफोर आई, लेकिन ये भी कंसिस्टेंटली नहीं फॉलो होता। तो इस रूल के भी कई एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के ऊपर एक्सेप्शन, राइट? और इंग्लिश में एक रूल है, प्लूरल शुड एंड इन एन एस, राइट? बट लाइक मैंने एग्जांपल दिया, ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल नहीं बनता है ऐड करने से, राइट? सो इस तरह के कई एक्सेप्शन होने के कारण लैंग्वेजेस बिकम डिफिकल्ट टू लर्न। और फिर यू हैव माइन्यूट वर्सेस मिनट। वर्ड तो एक ही तरह से लिखा है, लेकिन इट इज प्रोनाउंस्ड टू डिफरेंट वेज। विंड वर्सेस वाइंड, right? So and then there is the word lie, which can mean two different things in two different contexts. So ये सब inconsistencies and exceptions के कारण languages become difficult to learn. Then there is there, they pronounce exactly the same way, but you have to understand based on the context what is said, right? So learning languages is difficult. किसी ने भी language learn करने का try किया होगा तो they will realize that it is always a difficult process. In addition, there are different scripts, there are different tones, and different some languages even have tones. Like for instance, Vietnamese has apparently 8 different tones. Korean, you have to learn a whole lot of new characters, right? There is it's a pictographic language, so you have to learn all these characters. Hungarian has 18 cases and 14 vowels. So enough said. Languages often have complex grammatical systems. There are lots of complexities in languages. So what was Zamenhof's solution? It was to design a language that is easy. It is easy to learn,
and it has a consistent grammar. So what are some of the key principles देखा जाए तो पहला principle है consistent grammar. So Esperanto language में exceptions हैं ही नहीं. Okay, number one. Number two, it is spell as said. So जैसे बोला वैसे लिखा. Esperanto को you write it exactly like you said. There are no exceptions there also. वर्ड क्रिएशन भी इजी है. यू कैन इजीली क्रिएट न्यू वर्ड्स. उसमें धातु टाइप का एक कॉन्सेप्ट है जैसे संस्कृत में है. जैसे कि फॉर इंस्टेंस संस्कृत में वर्ण करके एक वर्ड है, सवर्ण करके एक और वर्ड है जिसमें धातु वर्ण है, उसमें स ऐड किया गया है. अवर्ण करके दूसरा वर्ड है, कुवर्ण करके तीसरा वर्ड है. इस सब में धातु वर्ण को लेके प्रीफिक्स ऐड किया गया है. सो उसी टाइप का लॉजिक डॉक्टर ज़ामनाफ ने अडॉप्ट किया. एंड he has tried to keep the roots of the words understandable. So उन्होंने फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन आदि लैंग्वेज से वर्ड्स बोरो किए. So the word for send is sendi, the word for receiving is ritseri, the word for cat is katto, the word for beast is besto. So you might think, oh, there's a lot of stuff from English, but actually he has given a lot of weightage to other languages also. So देखा जाए तो उनका आइडिया अच्छा था, बट नाउ 100+ years later we can see how we can improve on it, and that is where my language comes in. मेरे लैंग्वेज में you know what I have done is I have taken Esperanto and said that we can use this called a process of ayato or import. You can import any word in Hindi and import any word in Tamil. मैंने ये language, not just one conlang, but I've developed 2 different conlangs which I can speak, right? But I've also got other conlangs, as ideas which can be developed further. Because I've developed these conlangs and I've also developed a new philosophy. That's what I was working on this year, La Jaya Philosophia. ये सब देखे, one of the people in this Fulmo Talk Series panel discussion, हमें panel discussion करके बोलते हैं, but it's actually talk series. So Fulmo Talk Series में, he called me a genius, but what I'm really trying to say is that, developing a language does not have to be that difficult. Even I would even say that there's something anyone can do. But the goal, I think, that what is difficult is to develop a language that is really quick to learn, and that is where Esperanto can be improved on. इसलिए मैंने एक नया constructor language create किया है. Okay. So Esperanto को देखा जाए तो it is easy to learn. It has a consistent grammar with no exceptions. It is said as spelled and spelled as said. So it's also spelled as said. So एक word को एक बार बोल दिया तो एक ही ढंग से लिखा जा सकता है. It is easy to create new words, and it is also relatively easy to understand and unfamiliar words. ठीक है. So उन्होंने क्या किया, वो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन के जो मैंने एक्सेप्शंस बोले थे, जो इनकंसिस्टेंस बोले थे, उनको रिमूव करने का कोशिश किया. So if you look at comparison of vocabulary, for instance, another thing about languages is that they often have a huge vocabulary. English has 25,000 to 500,000 words. Korean has apparently 1,000,000 plus. So इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? उन्होंने क्या किया कि एस्पेरांटो में कोई 2000 रूट वर्ड्स क्रिएट किया और उस रूट वर्ड से बाकी सब वर्ड्स को डिराइव करने का कोशिश किया. So इसलिए एस्पेरांटो में vocabulary pickup also is somewhat easier. ठीक है. Although it is still a long process, you have to learn a lot of nouns and verbs. तो ये वाला जो प्रॉब्लम था वो भी मैंने मेरी लैंग्वेज में सॉल्व किया है. But this talk is just about Esperanto, so we'll focus on Esperanto. So let's summarize. So it's a language. The alphabet at least is very easy to learn. The grammar, well, actually, we should say that the language and the alphabet are both easy to learn. Okay, the grammar is there are no exceptions in the grammar. It's said as spelled, spelled as said, right? It is easy to create new words, and it is easy to understand unfamiliar words. So the Esperanto alphabet uses the Latin alphabet, that is A, B, C, D, like this. ये है Esperanto का alphabet, and it is always pronounced the same. Always pronounced the same. And remember, it doesn't have Q, W, X, and Y. Q, W, X, Y. You'll see it is missing. So in this talk, I just wanted to cover some important aspects of Esperanto, not necessarily cover it exhaustively, but
what I want to do is cover some of the basic motivations for why Esperanto was created and how 100 plus years later we can improve upon. So thanks very much for listening. I like to sincerely thank you for your time and in listening to the recording. So बहुत बहुत धन्यवाद. हम फुलमो टॉक सीरीज में और टॉक्स रिकॉर्ड करेंगे. So I hope you will come back to watch more videos in the talk series. And as we say in Esperanto, gratulon kai gis la revido. That means thanks and until later.